Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video I'm going to talk about my interview experience in Amazon. And before this, it was an on-campus opportunity. So before this we had one more round, that was online assessment test. So in that test we had three sections. The very first was coding round, and then it was a simulation kind of round where you need to simulate, they'll program some things which you'll feel that it was a kind of simulation in a day of Amazon engineer. And the third was a behavioral type of round. So this, I'll not talk much about this round because I have already made a detailed video in this channel, and I'll be attaching the link at the end of this video. So after this round, around 15 students were selected for interview, and all the students, all the interviews, all the rounds happened at the same day in our college. So now coming to the interview part, so it had three rounds. The very the what they did is that the last round was a mix of HR plus interview. So things started with HR thing around 10 to 15 minutes. They talked things related to HR, but after that they started technical discussions, and that round ended with technical discussions only. So but this thing can vary from college to college, and additionally one more round can be added, that will be a kind of bar raiser round. So these things will be vary. And now coming to this types of difficulty of questions. So that online assessment test had two questions, and difficulty of both those questions were easy, and this I'm talking with regard to lead code. So both the questions were kind of easy lead code questions. And now coming to this interview thing, so it had three rounds and we had around 7 to 8 questions. So difficulty will vary from easy to hard, and few questions will be trick based. So it is only trick based. If you got the trick, if you crack it there, then you'll be able to do it easily kind of. So this was all about the overall experience, and now we'll be seeing the type of questions. Although I'll not be able to tell the exact questions which were asked, but I'll be telling the type of questions and difficulty in much detail. So the interview consisted of 3 rounds. तो जो पहला राउंड था उसमें 4 सवाल थे, सेकेंड राउंड में 2 क्वेश्चंस थे, एंड थर्ड राउंड में भी 2 क्वेश्चंस थे. तो जो तीसरा राउंड था वो HR प्लस टेक्निकल हो गया था हमारा, एंड इन HR इट वाज अराउंड 15 मिनट्स. तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. तो पहला राउंड में जो 4 सवाल था उसका पहला क्वेश्चन था बेस्ड ऑन लिंक्ड लिस्ट, एंड द रेस्ट 3 क्वेश्चंस these were based on arrays. So you can do it using maps and all, but it can be done simply using arrays, so I am counting it under arrays. तो linked list का जो सवाल था that was completely based on tricks. तो अगर तुम्हें ट्रिक्स वहाँ पे तुरंत समझ में आ रही है, क्रैक हो रही है, तो दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू इट, एंड इट वाज बेस्ड ऑन सम डिलीशन ऑफ नोट्स. उस पे क्वेश्चन बनाया हुआ था उन्होंने. सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, जस्ट अ ट्रिक बेस्ड. नाउ कमिंग टू द एरेज. सो एरेज के जो क्वेश्चन थे वो मीडियम लेवल क्वेश्चन थे, इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन थे. एंड व्हाट इज द इशू की जब मतलब इनफैक्ट क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि तुमने लीड कोड या फिर GFG पर देख रखा होगा, यहाँ पर देख रखा होगा, यहाँ पे कर भी रखा होगा, बट द थिंग हियर इज दैट दे विल पुश हियर फॉर ऑप्टिमाइजेशन. यहाँ पर तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोला जाएगा. व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन वी प्रैक्टिस इन GFG लीड कोड, अगर हमारा कोड O ऑफ n स्क्वायर में भी पास हो जाता है, तो वी डोंट लुक फॉर और वी डोंट ट्राई टू थिंक फॉर गुड सोल्यूशंस. सो यहाँ पे ऐसा होगा कि दे विल आस्क यू टू गो फॉर बेटर सोल्यूशंस. सो इफ यू आर हैविंग O ऑफ n स्क्वायर, देन यू हैव टू रिड्यूस इट टू मे बी O ऑफ n. So what happened is that in fourth question I started with O of n square, then finally I reduced it to O of n, and this is not the case just with time. तो तुम्हें स्पेस का भी ख्याल रखना होगा. So state also I started with O of n, but finally I reduced it to O of 1. तो ऐसा वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए तुम्हें पुश करेंगे, एंड फाइनली यू हैव टू कम अप विद दैट. सो इट्स बेटर कि व्हेन यू प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो उसी वक्त क्या करो, या तो अच्छा सोल्यूशन खुद से सोच लो, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक, तुम जाके कुछ सोल्यूशंस देख सकते हो जहाँ पे उन्होंने अच्छे सोल्यूशंस लिख रखे हैं. सो दिस विल हेल्प अ लॉट बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू थिंक इजली इफ यू आर प्रैक्टिसिंग लाइक दैट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड राउंड. So after 1 hour I got a call for second round, and इसमें 2 क्वेश्चन थे. तो जो पहला क्वेश्चन था वो बेस्ड ऑन arrays, एंड जो सेकंड क्वेश्चन था वो it was based on trees.
so particularly BST. तो एरे का जो सवाल था, आई से इट वाज इजी टू मीडियम, एंड जो ट्री का क्वेश्चन था वो मीडियम टू हार्ड था. सो मीडियम में ही गिनो दोनों को, बट दिस वाज इजी मीडियम एंड दिस वाज थोड़ा सा हार्ड मीडियम. सो एरे का जो सवाल था, इट वाज लाइक इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड, मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड, हाउ यू आर एबल, लाइक हाउ यू आर राइटिंग योर कोड, implementation based. And it will take some time to write this code because code थोड़ा लंबा होने वाला था. And for me it took around 20 minutes क्योंकि मैंने बहुत आराम आराम से कोड लिखा था, समझा समझा के, and also took test cases, कि बीच बीच में टेस्ट केसेस भी डिस्कस कर रहा था मैं. एंड ट्रीज का जो क्वेश्चन था, इट वाज कम्प्लीटली न्यू. ऐसे मतलब ऐसा क्वेश्चन तो हो सकता है तुमने देख रखा हो, बट ट्री का जो क्वेश्चन था दैट वाज कम्प्लीटली न्यू. And it was a good question. I'll say it was like I told initially only. I told that it was medium to hard, and it was a good question. So it took me around 25 minutes क्योंकि मैं वहाँ पर स्क्रीन पे ट्री बना बना कर टेस्ट केसेस ले लेके समझा रहा था. एंड लाइक ऑल्सो फॉर राइटिंग कोड, I was writing code slowly and trying to avoid mistakes जो जनरली ट्रीज और इन सब मेरे रिकर्सिव क्वेश्चंस में हो जाते हैं. So it took me around 25 minutes, but I was able to do both the questions by my own. नाउ कमिंग टू द थर्ड राउंड, कि यहाँ पर क्या था कि इसमें उन्होंने दो सवाल पूछ रखे थे. जो पहला सवाल था वो लिंक लिस्ट प्लस ट्रीज का सवाल था, एंड इट वाज इजी, मतलब मीडियम में इजी था यार, मीडियम था बट इजी था मीडियम का. एंड जो सेकंड क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड ऑन बाइनरी सर्च, एंड दिस क्वेश्चन वाज अ हार्ड क्वेश्चन बिकॉज इसमें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी बाइनरी सर्च लगने वाली है क्योंकि एरे वाज नॉट सॉर्टेड. एरे वाज नॉट सॉर्टेड एंड आई स्टार्टेड द कोड फ्रॉम ओ ऑफ एन स्क्वेयर. बहुत ही ऑप्टिमाइज कोड लिखा था, एंड देन फाइनली रिड्यूस टू ओ ऑफ एन. जब यहाँ से भी शी वॉज नॉट हैप्पी विथ मी, शी पुश्ड मी टू गो फॉर ओ ऑफ लॉग इन. जब उन्होंने लॉग इन का बोला, देन आई स्टार्टेड थिंक चलो लॉग इन का एक एल्गोरिदम मुझे पता है, दैट इज बाइनरी सर्च, उस पर अगर हो पाता है तो लेट्स सी. Then like it, I was continuously discussing with her, and she helped me to get to this binary search approach. So this was a good question, and it took me around 30 minutes. Around 30 minutes because I started with this approach, and 4 or 5 approaches down the line, I came to this O of n of login. So इसमें तो ऐसा था कि it took around 30 minutes, and I was not even having enough time to write code, but she was happy with the approach, and yeah, so this was happening. एंड जो पहला क्वेश्चन था वो ट्री और लिंक लिस्ट का था, तो दिस वाज आल्सो कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड, बहुत हार्ड नहीं था. एंड व्हाट वाज द इशू, लाइक कि जब आप ट्री और लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस बनाते हो तो कोड काफी लंबा होने लगता है, एंड इट बिकम्स मेसी. और कुछ चीजें खासकर नल पॉइंट एक्सेप्शन, तो ये सारे आने शुरू हो जाते हैं. तो शी विल द पर्सन विल नोटिस कि आप इन चीजों का ख्याल रखे हो कि नहीं. जब भी यू नीड सम फंक्शन, जब जैसे कि मिड पॉइंट ढूंढने का जरूरत है, तो आपने मिड पॉइंट को वहीं घुसा दिया, मिड पॉइंट का पूरा कोड, या फिर यू आर राइटिंग इट सेपरेटली. दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स शी विल बी लाइक द पर्सन विल बी नोटिसिंग. एंड ये कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होने वाला है. इट डिडंट टुक मच टाइम, बट राइटिंग कोड आई थिंक अराउंड 15 minutes it took. So this was the overall coding part. And now coming to what other things were asked. So the पहला थिंग था वो इंटर्न का बात था, एंड इसके अलावा जो डिस्कस हुई थी चीज़ें वो थी प्रोजेक्ट्स. सो प्रोजेक्ट का तो ऐसा सीन है कि इफ़ यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट इन योर बीटेक और वॉट एवर कोर्स यू आर, सो लाइक you should be clear about whatever you are doing and like what things you are working on. So तुम्हें अपना टेक स्टैक का भी पता होना चाहिए, बेसिक चीजें पता होना चाहिए, एंड लाइक इट शुड नॉट बी कि तुमने कर रखा है और अब तुम भूल चुके हो and you are not able to answer simple questions regarding your project. So this will give a very bad impression even if you are doing in group. So have a basic idea of what things your group is working on ताकि तुम वहाँ पे explain कर सको. And now coming to the internship. So internship was something like it was I did my internship in Publicis Sapient, and like I work in a like मेरी जो project थी वो काफी बड़ी थी, and we have to build it using scratch. So we got a team of 10 members, and this was really like huge 10 members. Other team was having 2 members, 3 members, and we were having a team of 10 members to build this from scratch. So we worked on AWS also in this project. So it was a something like
this was something which was having a good implication here, and it was impressive. So in all the 3 rounds, I had 3 rounds. In all the 3 rounds, they asked questions regarding this, and this was very helpful for me in the interview, all the 3 rounds of interviews. So intern और projects के बारे में discuss होंगे तुम्हारे, and now coming to what other things. So DBMS, operating system, computer networks, and OOPS. इन सब पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक, बट व्हाट हैपेंड इज दैट मेरे से उन्होंने इस पे एक भी सवाल नहीं पूछा था, लाइक एनी टॉपिक कुछ भी नहीं पूछा था इसके अलावा इन सब में. एंड बट दिस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इंटरव्यू. सो ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे नहीं पूछा तो आपसे नहीं पूछेंगे. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, एंड इवन आई प्रिपेयर्ड. सो व्हाट हैपेंड इज दैट कि मैंने फराज का शीट प्रिपेयर कर रखा था. सो आई होप यू नो दिस गाय, काफी फेमस बंदा है अभी, and he has made a sheet regarding all these things. So you can check out his sheet. ये काफी crisp concise है इसमें सारी चीजें, and you can prepare using this. And if you don't want that, then you can go for Gate Smashers. This is a YouTube channel. सुन ही रखा होगा इसका भी. So like initially during courses of OS, CN, DBMS, I have gone through his videos, but finally because I was having good knowledge of these things, so I just prepared using Farashi. And like if you are happy with this, like if you are having good knowledge, then just go with this one. You will be able to crack it. Like you will be able to know what things are there. And apart from this thing, what other things you need to take care during interview is that first thing is that when you are writing the code, talking just about coding, when you're writing the code, you have to do 2 things. First is to explain and code, and then you have to do both. While you're writing the code, then also you need to explain things. So this is one of the things which, if you're not able to do it, just try. If you're not able to do it, practice for this, because this is going to help you a lot during the interviews, and this will be like the key thing, because like it is very important to keep the interviewer busy with you. He should not feel, he should or she should not feel that you are just writing code blindly and he is sitting idle. So this should not be happening, and this will also be counted as a part of communication. So आपका communication कैसा है वो इसमें भी count होगा. Whether you are able to explain your code well, whatever ideas you are having, अगर आप उसको एक सही से नहीं explain कर रहे हो तो that will be counted as negative. And इसके अलावा यार simple चीज़ें, but that will matter a lot, जैसे कि variables के name, functions बनाया कि नहीं बनाया, अगर मिड पॉइंट की ज़रूरत है तो वहाँ functions अलग से बनाओ. That make your code look like very neat, pretty, readable kind of, ताकि वो बंदा भी देख के समझ जाए कि हाँ चलो इसने फंक्शन बना दिया है, इसने वेरिएबल्स के नाम सही से रखे हैं. वेरिएबल्स के नाम देख के पता लगना चाहिए कि व्हाट इज दैट वेरिएबल फॉर. सो यही बेसिक चीज़ों का ख्याल रखो. एंड इसके अलावा यार प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, वन थिंग आई विल से कि जीएफजी के आर्काइव्स है, जीएफजी के आर्काइव्स है, इंटरव्यू आर्काइव्स है, वो जाकर देखो. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. वहाँ से क्वेश्चन सिमिलर टाइप से ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर सेम भी हो सकते आ जाए बहुत बारी. एंड इसके अलावा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अमेजोन, तो अमेजोन टैग्ड क्वेश्चंस कर लो. जीएफजी के अमेजोन टैग्ड क्वेश्चंस कर लो. दैट विल बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. एंड दिस आई एम जस्ट टॉकिंग रिगार्डिंग इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा ये चीज़ें, ये दोनों चीज़. एंड तुम्हें सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं. नाउ आफ्टर दिस, कमिंग टू माय मिस्टेक्स, व्हाट आई डिड. सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज दैट कि इनिशियली मैं पैनिक कर रहा था, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इशू. एंड ऐसा हो गया था कि इनिशियली इंटरनेट चला गया था इन द मिड ऑफ इंटरव्यू, एंड आई स्टार्टेड टू पैनिक. एंड ड्यू टू दिस, जो आई वाज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली. इनिशियली ऐसा हो रहा था, but after some time, it was good. I was good with this. And you should try to not to panic in those kind of situations. मैं थोड़ा घबरा रहा था कि यार इंटरनेट जा रहा है तो कुछ ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा, ऐसा ऐसा सोच रहा था. बट दिस काइंड ऑफ थिंग डजंट हैपन. उन्होंने मुझे खुद से बोल दिया था कि डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, इट वोंट बी काउंटेड ऑन योर बैक. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा दिक्कत हुआ था मुझे. इन थर्ड राउंड दे आस्क्ड मी अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थिंग. तो उसमें मैंने एक सवाल गलत बताया था, बट
soon I realized कि मैंने गलत बता रखा है. Like it was O of n log n और मैंने बता के आया था O of n square. But I realized it and I corrected, but later on. So this was the mistake I did. So yeah, this was all about the interview, and I hope this will work for you and you will learn something from here and it will be helpful for you.